people, and today we'll be studying how to decompose a vector into its components. Let's see what we mean. Suppose I have a coordinate system. Okay, ये हमारा x, y पूरा setup है ना 0 0, and we have a vector. Yeah. Let me call this vector some say a. और x के साथ एक थीटा का एंगल बना रहे हैं. इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा with respect to x axis. Okay, so what do we mean to resolve its components? We mean to project a and see, okay, कितनी length a की x पे पड़ रही है. Well, we'll look into this a bit later, but first let me introduce you to unit vectors. They're very important. मान लेते हैं 3 dimension coordinate system. Okay, so if this is x, this is y, this will be z. X, y and z. Okay, you can check this for yourself. Now there are 3 very special vectors. Okay, these vectors are purely, first of all, they are purely along z, y or z or x direction, है ना. ये पूरे के पूरे x, y और z में होते हैं, and their magnitude is 1 unit. उनका magnitude 1 होता है. ठीक है, 1 unit जो भी लगाने हैं. Let me represent them like this. Okay, 1 unit, entirely in z, entirely in x, entirely in y direction. है ना? Then how do we represent them? Well, the one which points towards x or positive x direction, इसको हम कहते हैं I cap. I, उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, I cap. जो y की तरफ है उसमें j cap, similarly k cap. Okay, I cap, I cap towards x, j cap towards y and k cap towards z. अब हमें कोई दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करना है जो प्योरली एक्स डायरेक्शन में. फॉर इंस्टेंस, लेट मी रिप्रेजेंट दिस वन. ओके, लेट मी कॉल दिस वेक्टर सम p वेक्टर and it has a length 5 units. So how do we write it in vector form? We say p, okay, is equal to 5 I cap. मैंने आपको बताया था इसके मल्टीप्लिकेशन विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर. 5 ने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, एंड द डायरेक्शन, बट द डायरेक्शन रिमेन सेम. इट्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. So 5 units in positive x direction, that's what we mean. And similarly, you can do for in positive y direction z, or what happens if we p is in negative x direction. इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में 5 units, बिल्कुल अलग अलग. So here let me call this q. So q will be एक वेक्टर उसका उल्टा, which means minus 5 I cap. Okay, that's how we write a vector into its components. Now our task here, okay, is to resolve this vector into its x or y component. कैसे? देखो, ये वेक्टर अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ऐसा वेक्टर जो प्योरली x में नहीं, प्योरली y में नहीं, इट्स समवेयर इन द प्लेन. अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूं तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर. ओके, हेड टू टेल मेथड. रिमेंबर द हेड टू टेल मेथड. ये वी टुक अ वेक्टर, वी प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर ऑन टेल ऑफ द सेकंड वन ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वन. ठीक है, अब हमने ऐसे लिख दिया. अब देखो इसका फायदा क्या है कि दिस वन is purely in x and this one is purely in y. This helps a lot. Okay, so let me call this vector say b and c. Fine. So vector a is equal to vector b plus vector c. Alright, and now we need to find the magnitudes. Okay, now how do we find the magnitudes? Well, we just consider them as lengths, as sides, and then we can find the length of these sides, है ना. sides मान लिया इसका मैग्नीट्यूड a है. अब a की टर्म्स में हमें b और c का मैग्नीट्यूड चाहिए. so this will be a sin theta, this will be
A cos theta. Right? Now B magnitude of B is this length, which is A cos theta. है ना? Now if you want to write vector B, so vector B will be A cos theta in positive x direction, which means B is A cos theta I cap. Alright. And C, similarly, you can do this for yourself, is A sin theta j cap, which is in positive y direction. है ना? यहाँ से ऊपर की तरफ in purely in y. So A can be written as A cos theta I cap plus A sin theta j cap, and this is very important. Now if I write A cos theta as AX, you can write this as AX I cap plus AY j cap, and this is extremely crucial. हमें क्या पता है, हमें ये मिल गया इसका x कंपोनेंट कौन सा, इसका x पार्ट कौन सा है. सो AX विल बी A cos थीटा अगर थीटा हम x एक्सिस से मेजर कर रहे हैं. सो एनी वेक्टर कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इन सच अ फॉर्म, its component into I cap, its component to j cap, or in general we can have AZ k cap. Here is AZ is 0 since we are dealing in xy plane. Okay, this is k cap. So now the thing is, how do we add two vectors? Okay, addition is goes the same way. Say we have some vector A written as AX I cap plus AY j cap plus AZ k cap, and we have a vector B, okay, BX I cap plus BY j cap plus BZ k cap, and we need to do A plus B. Now you must realize we can't draw vectors over and over again and keep adding them in graphical way. So the algebraic way is just A plus B. Okay, it's trivial, very simple. क्या करेंगे, जो x जो I का पार्ट था उन सीधा सीधा ऐड कर देंगे, which is AX plus BX I cap. So the next term obviously पता चल गया होगा अब तक, AY plus BY j cap plus AZ plus BZ k cap. ये मिल गया हमें. Now you can convince yourself that A vector A plus vector B is same as vector B plus vector A, है ना. अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये कंपोनेंट चेंज, ये कंपोनेंट चेंज, ये कंपोनेंट चेंज, फर्क पड़ेगा नहीं, ऑफ कोर्स. And if you want to do A minus B, so you replace BX with minus BX, BY with minus BY, and BZ with minus BZ. So quick application कैसे होगा? Say you have a block, okay, you're applying a force F at some angle, let's say theta, okay, it has a mass m, है ना. रेलवे पे जाते हैं अपनी बैग लेके, ट्रॉली वाले बैग्स लेके, and we need to find how its velocity, acceleration and displacements are related using in these conditions. Okay, now the thing is we are concerned with motion along the x-axis, है ना. बैग उड़ता तो नहीं है, बैग तो एक डायरेक्शन में जाता है. So we resolve them. So an x component is F cos theta. So the force in this direction is F cos theta. Okay, and in y direction it's F sin theta. You have nothing to do in y direction, but still I'm resolving it. Now we know force is mass times acceleration. So F cos theta is equal to ma, the x component. Okay, so a, the entire acceleration is in x direction, F by m cos theta. And the good thing is, important realization is, these two components are independent of each other. What I mean to say is,
मैं एफ का वर्टिकल कंपोनेंट, लेट मी ड्रॉ दिस समवेयर है, इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एफ इन वाई डायरेक्शन, एफ इन जेड डायरेक्शन, एफ एक्स डायरेक्शन। मैं वाई को कितना भी वेरी कर लूँ, उसका एक्स डायरेक्शन वाले मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी इंट्यूटिव। इफ यू पुल दिस ब्लॉक perfectly vertically, it doesn't go sideways, it goes up. So yeah, this is one way to realize this intuitively. So इस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन है उस पर, जो एक्स वाली एक्सेलरेशन है उस पर एफ साइन थीटा का कोई असर नहीं होगा, नथिंग मैटर्स. So yeah, if f is constant, if mass is constant and we apply this as angle theta, we get v as f by m cos theta into time. V is equal to 80, right? And we have assumed the initial velocity to be 0. Now my question for you is, how does the displacement of this block varies with time? That's one thing you should work on. So yes, that's for today. We learned how to decompose vectors. In the next video we'll see how to multiply two vectors. Thanks for watching.